against the popular government. So why you are against the government? गवर्नमेंट हम लोग को भी पता है हमारा मणिपुर में जो भी PR में क्या हुआ कि गवर्नमेंट दोबारा फॉर्म करेंगे, उसी बीजेपी गवर्नमेंट आएंगे। हम लोग सिर्फ हम नहीं चाहते कि वो पॉपुलर गवर्नमेंट भी फॉर्म हो। आप लोगों को न्याय किस तरीके का चाहिए? हम लोग को न्याय चीज हमारे और गैंग रेप अभी तक कुछ भी न्याय नहीं हुआ। आरामबाई टेंगोल हो गया, अभी तक सुप्रीम कोर्ट डेट की बात तारीख वही चलती जा रहे हैं। और जो भी आप लोग को 6,000 तक वही आरामबाई लोगों के पास पड़ी है। भारत सरकार किसी ने वो वापस लेने का अभी तक बोल के किसी के पास खबर है। मैं आपसे कुछ भी नहीं है, तो हम उसी कैसे वापस जाए। और हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार काम करे तो ढंग से काम करो, ताकि जो भी चीज जो हो रहा है वो चीज को कम से कम उसी में से ठीक से काम करो। अभी तक क्या कारण हुआ कि जो आप लोगों को न्याय नहीं मिला और ये 3 साल न्याय के लिए तो हमेशा लड़ने आए हैं। अभी तक सरकार हम लोग के लिए हमारे साथ न्याय होता तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या मानसिकता लगती है आपके हिसाब से? गवर्नमेंट की क्या गवर्नमेंट तो सीधी सी बात ही है। जहाँ पे वोट ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा उसी में इसलिए हम लोग को दबा के हम लोग आदिवासी ट्राइबल्स है, हमारे पॉपुलेशन फिर भी हम लोग भी तो भारत ही है ना। तो अब हम जिस जगह पे हम रह नहीं सकते, जहाँ पे हम लोग को धक्का मार के निकाल दिया, तो हम चाहते हैं कि हम लोग के लिए अलग से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए बोले, तो तभी तक दिले 3 साल तक सरकार अनसुनाई की। यही चीज हम चाहते, हम अभी भी भारत लोगों से अपना देशवासियों से हम प्रे करते हैं। आप लोग को सबको खबर है कि सबको पता ही है हमारे बेटियों के साथ क्या हुआ है। हमारा 6,000 से और 200 से ज्यादा लोगों को मार गया है। हम खुद मेरा घर इंफाल में है, वहाँ पे मैं नहीं जा सकती, मेरे घर सब जला चुके। हम सिर्फ चप्पल पहन के जिंदगी भर के लिए कमाई, हमने जिंदगी भर के लिए कमाई करके अपने घर बनाया। 1 मिनट में खत्म हो। और एक और चीज, इतनी हजारों साल साथ में रहे हैं, मैतेई, नागा, मणिपुर, तीनों समुदाय एक साथ में रहे। रातों रात हम लोग रिफ्यूजी हो गए, इलीगल इमाइग्रेंट के कहाँ से कैसे, हम यही चीज भी लोगों से पूछना। सभी समुदाय साथ में थे, आखिर में क्या ऐसा कारण हुआ जो मणिपुर के अंदर में इतनी बड़ी हिंसा हुई? ये चीज तो पॉलिटिकल लोग ही करते हैं। वही चीज हम लोग को समझ नहीं आती। हम इतनी पीसफुली साथ में रही है, हमको कोई भी पैदा हुई। अब मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे अभी मैं कभी हम मणिपुर में पैदा किसी भी हालत में हम लोग को कुकीलैंड चाहिए। हम लोग कुकीलैंड नहीं मिलेंगे, हम ऑब्वियसली सोल्यूशन नहीं है। तो अभी तक आप लोग को भी पता है, जहाँ पे भी हम जाते हैं लोगों को पता ही नहीं होता रियलिटी सच्चाई क्या होता है कि इंफाल में न एक कुकी जा सकते, कुकी एरिया में एक भी मैतेई नहीं आ सकते। इवन चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ पे चीफ मिनिस्टर फिर भी कुकी एरिया में अभी तक आ नहीं सकते, एक कदम नहीं रख पाए। इस बार प्राइम मिनिस्टर पीएम आए हैं, PMQ मणिपुर में PMQ 2 जगह में क्यों आया, एक चुरचानपुर में आया, एक इंफाल में आया। यही साबित होता है कि हम लोग अलग, सिंपल सी बात होता है। तो अगर हर चीज में तुमने साबित कर चुकी है तो ऑफिशियली अनाउंस कर दो, हमारा कुकीलैंड दे दो। यही चीज हम लोग, अगर आप लोग को गलत लगता है क्या, मणिपुर स्टेट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2 जगह पे गए, एक चुरचानपुर में गए ना, आप लोग को भी पता है, एक अगर यही बात होता PM दोनों
साथ में मिला सकते थे ना, मगर पीएम ने और हम लोग को अलग किया। पीएम ने एक चुरचानपुर में गए, उसके बाद भोपाल में गए। इसका ये साबित करती है कि हम लोग मैथे और कुकी अलग हो चुकी है। यही चीज को हम लोग ऑफिशियली क्लियर कर दो, मैं हम यही चाहते हैं। Start. Sir, you are asking the separate administration here. In these nowadays, we see that Naxalis are joining the mainstream democracy. The situation in Kashmir is improving. Then why are you asking a separate administration from in India, where other who were separate are joining with the mainstream? Thank you for the question. One has to understand the difference between Naxalism and the demand of the cookies. And for that matter, it is important to understand nationalism, separatism, and secessionism, right? The Meiteis are secessionists. They're demanding separation from the Indian Union. Whereas Naxals, although they may claim themselves to be nationalist, the government of India is high-handed on the Naxals because they took up arms against the government of India. Taking up arms, and you cannot imagine the number of casualties suffered by the security forces of India in the hands of the Naxals. Whereas for the cookies, have you ever heard of any casualties committed from the Kuki community? No. In fact, Kuki so-called suspension of operation, armed groups entered into suspension of operation, and they have signed suspension of operation, and now the political dialogue is ongoing within the government of India in a peaceful manner. And in fact, our forefathers have joined INA alongside Subhash Chandra Bose to fight for India. So therefore, one cannot compare between Naxals and the cookies. The cookies are true nationalists, and their demand is very much within the ambit of the Indian Constitution. Article 3 of the Indian Constitution allows redrawing and separation of any state for that matter if, say, the parliament deems fit. And I think the Kuki people deserved to be separated because we have been chased out by the dominant community. Because in India, there is no community where a minority community is being forcefully chased out with the use of violence by a dominant community. They are two heading the government, head of the government. Therefore, the Kukis have every right because the demand for separation by the Naxalites, the demand for, say, separation in Telangana, for that matter, in Andhra Pradesh, and the demand for so-called Schedule 6 protection in Ladakh, no government or no dominant community has ever come, into violence or chased away a particular community using violence. Therefore, it is important, it is pertinent that we understand the demand of the cookies, and we understand that the idea behind, say, difference between Naxalism and... Can you please explain this protest you are doing at Jantar Mantar right now? The main purpose of this sit-in protest is to show that we are not happy with the idea of popular government. The Kuki people strongly and vehemently opposed the institution of popular government. Unless there is separation, we are going to stand against popular government. If at all popular government is to be instituted, we want to institute popular government after separation, because the demand of the Kuki is unity with legislature, protected under the 6th schedule of the Indian Constitution, and once that is assured and given to us, we will institute the popular government in our own separate administration, our own land, in our own union territory. Nowadays, where even Naxalis are joining the mainstream democracy, situation in Kashmir has been improving, and others who were dissatisfied with the democracy setup are getting part of the democracy again, and you are demanding a separation. How is this relevant?
That is a very good question. See, one must understand and distinguish the difference between nationalism and the demand of the cookies. And for that matter, one has to distinguish between separatism and, sorry, secessionist, separatism and nationalist. The cookie is a nationalist. We are not secessionist. We are not separatist. And naxalism, yes, we appreciate that the Indian government is taking an initiative, and finally they have come over ground and they're joining the mainstream. But that's, I mean, the demand of the, say, Naxals are totally different from what the Kuki people are demanding. Now we are demanding separation, not from India. One must understand this. Separation from the Meiteis. Tell me any country, any state in India that has a government set up, throwing away, kicking out a particular community just because they are demanding separation, because the other dominant group have already kicked them out. Take for example, Gorkhaland demand in West Bengal. Is the Mamata Banerjee government kicking away and initiating violence against Gorkha community? No. Take for example the Ladakhis are demanding for 6th schedule protection under 6th schedule protection, because although they are now union territory, but is the government of India, or for that matter the Kashmir or other opposing government initiating violence against this community? No, not at all. We have, as a citizen of India, we have every right under Article 19, the freedom to protest, the freedom to demand. And the Constitution of India under Article 3 also says very clearly that if need be, the Parliament can enact a law and redraw the boundary, create another state, and rename a state. So it is very constitutional and very different from Naxalism. How do you see the PM visit in the Manipur? It is remarkable for favors there, or Thank you for asking me the question. I've been waiting for a question like that. When the Prime Minister of India came, yes, there was, say, a political will from his side, but the political will to actually solve the problem is missing. Why I'm saying this is because a financial package of 8,000 crore, 7,000 crore, what will that do? I mean, you see, one of the largest convention center in Asia is constructed in Dhaka. I've forgotten the name of the convention center. It costs how many? 24,000 crore rupees to construct a convention center. And you want to solve the problem of and heal the emotional hurt of the Kuki people who have lost everything just with few thousand crores, because 8,000 crore was divided and bifurcated into the Nagas, the Kukis and the Meiteis, and the Kukis got the abysmal amount from the 7,000 crore. See, we are not demanding for money, we are not demanding for any emotional healing at the moment, sorry. Once and for all, grant a separate administration, union territory with legislature, protected under the 6th schedule of the Indian Constitution. And I'm telling you, emotional, every hurt will heal. We will be healed, and once and for all. And that's the constant demand of the cookies, and we will continue to stand and abide by this demand. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.